भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति का इस आयोजन को लाभ हुआ है। हम सभी भाग्यशाली महसूस करते हैं और आपको साभार नमन करते हैं। तालियों की गूंज के साथ हम इस पल को सजाएंगे। माननीय मंत्री बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष, भारत सरकार, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से मैं स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। Namaskar, good morning to you all. With deep sense of gratitude, I welcome our most popular and dynamic Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Maharashtra, Shri Ramesh Bais ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra and Goa, Shri Eknath Shinde ji and Shri Pramod Sawan ji, Honorable Minister of State for Port Shipping Waterways, Sripat Nayak ji, Santanu Thakur ji, esteemed Honorable Minister from Global Maritime Nation, State Ministers, MPs, MLAs, distinguished guests, delegates, Speaker, all participants, industry leaders, organizers at this august gathering marking the opening of the third edition of Global Maritime India Summit 2023 in the historic maritime city of Mumbai. We are extremely grateful for the gracious presence of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji at this inaugural session of Global Maritime India Summit 2023. It is under his visionary leadership that India's maritime sector has achieved remarkable feat and progressed swiftly towards becoming a global maritime leader. Our nation has witnessed an exceptionally vibrant phase of growth and development during the past decades. We have remained steadfastly committed to the guiding principle of perform, reform and transform, creating a dynamic shift in India's socio-economic landscape. From the 10th largest economy in the world in 2014, India has grown swiftly in just 9 years to become the 5th largest, and very soon will be the 3rd largest economy in the world. We are not only growing bigger, but we are also now the fastest growing major economy. Our national health insurance program ensures free medical treatment for about 500 million people. Nearly 500 million people benefited from world's largest financial inclusion drive, by which we took banking to the unbanked. Through Digital India program, today there are more than 850 million smartphones and internet users in the country. Last year, out of every 100 real-time digital payments in the world, 46 happened in India. We protected our people with 2.2 billion doses of Made in India COVID vaccine, and that too free of cost. During COVID, we delivered vaccine and medicine to over 150 countries. In the last 9 years, over 1 billion people got a unique digital biometrics identity connected with their bank account and mobile phones. 850 million people received direct benefit financial transfer into their accounts. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, we become the only G20 countries to meet its Paris commitment.
We met renewable account for over 40% of our energy sources 9 years ahead of the target of 2030. The entire world witnessed the strength of India's scientific spirit, technology, and temperament by our successful moon landing. The G20 presidency under the leadership of our Honorable Prime Minister is a historic milestone in India's journey towards donning the mantle of a global leader. Our Honorable Prime Minister's visions of transformation through transportation has seen radical growth in the coastal and inland waterways. Inland waterways transport sector witnessed a stupendous growth of 1700% in cargo movement during past 9 years. During the first Maritime India Summit at Mumbai in 2016, Honorable Prime Minister launched the National Prospective Plan for the holistic development of the Indian coastlines and maritime sector under our flagship initiative, Sagramala. In just 7 years, this transformative initiative has grown, and 809 project worth investment of rupees 5.6 lakh crores have been identified for implementation by 2035, of which 228 project worth of rupees 1.22 lakhs crores have already been completed. During the second Maritime India Summit, Honorable Prime Minister launched the Maritime India Vision 2030, charting out our grand vision and planning our goal for this decade. As a result of these two mega initiatives launched by Honorable Prime Minister in the earlier two editions of MIS, today we are witnessing the exceptional growth in the Indian maritime sector. Maritime Amrit Kal Vision 2047, envisioning our maritime objective in the coming decades, is being launched by Honorable Prime Minister today. Realizing the importance of private sector participation in maritime sector, the government has worked to achieve 1.7 times growth in number of PPP projects. This summit marks another milestone in India's maritime heritage, serving as a global platform to engage with stakeholders and investors. Our major ports are today witnessing double-digit annual growth, and as per the recent World Bank Logistic Performance Index reports on various port performance indicators, we fare much better than advanced countries such as Canada, Australia, USA, and Germany. This summit has already attracted investors' interest with over 300 MOUs identified by various organizations under our ministry. This summit shall facilitate collaborative partnership, attracting investment across wide range of opportunity India's maritime has to offer. I thank you all for your participation and look forward to working together in the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. Let us all adopt Honorable Prime Minister Narendra Modi's mantra of lifestyle for environment in our developmental initiative, leading to globally transformative action, resulting in a cleaner, greener, and bluer future. With these few words, by giving my deep regard to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and welcoming all the delegates across the world to this historic event, thank you. Jai Hind. I thank the Honorable Minister for Ports, Shipping and Waterways and Ayush, Government of India, for the welcome address and summarizing the summit's objectives. Ladies and gentlemen, we will now screen a short film showcasing the essence of the Global Maritime India Summit and a visual insight into the monumental event. AV, please.
40 shipyards, 12 major and 200 other ports, dotted along a picturesque coastline spanning more than 7,500 kilometers. This is India, amongst the largest maritime countries in the world. Welcome to the Global Maritime India Summit 2023. Namaste. Welcome to an ocean of opportunities. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the Indian maritime sector has seen an explosive growth in the previous decade. Port capacity has doubled. Cargo handling through inland waterways has quadrupled. Seafarers have increased by 121%. While the operationalization of public-private partnership projects has increased by 150%. पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर जो काम हो रहा है उससे देश को नई ताकत मिल रही है. GMIS 2023 brings together over 70 plus nations, maritime stakeholders from across the world, with Indian coastal states and union territories as partners. Together, we will connect, converge and collaborate on a single transformative platform. In the past editions, GMIS has witnessed wide global participation with investment decisions worth 4.5 lakh crore rupees, leading to iconic initiatives like the Sagarmala project and Maritime India Vision 2030. This year, GMIS in Mumbai is poised to break new ground. 300 plus MOUs worth more than 7.2 lakh crores to be exchanged, and investable projects worth 1.7 lakh crore rupees to be showcased. This is a grand opportunity to be part of a global CEO forum, 31 conference sessions covering various themes. All of these and much more await you in an exhibition area spread over 8,000 plus square meters. Immerse yourself in India's blue economy and catch a glimpse of future possibilities. Together, let's navigate towards a brighter, more sustainable maritime future. Was GMIS in a nutshell for all of us. और अब समय है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 4 परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास, लॉन्च तथा राष्ट्र के नाम समर्पण का. सबसे पहले 18,800 करोड़ रुपए के मूल्य की परियोजनाओं का लोकार्पण. रिमोट का बटन दबाकर ई फलक का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं. Today, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has dedicated, inaugurated and laid foundation stones of 21 projects worth 18,800 crore rupees. Here's a glimpse into some of them. Haridaspur Paradeep rail line. It will lead to reduction of rail freight and decongestion. 5th oil berth at Marine Oil Terminal, Jawahar Dweep, so that it can handle larger vessels with improved ship turnaround time. Development of Special Economic Zone at Jawaharlal Nehru Port Authority with an investment of 4,000 crore rupees will create 57,000 direct jobs. 4th Container Terminal at Jawaharlal Nehru Port Authority, JNPA, so it can handle large size vessels, facilitating increased container cargo and also
the reduction of congestion, deepening and optimization of inner harbour facilities, including development of Western Dock at Paradeep Port Authority, handling of large cape-sized vessels up to 18-meter draft, capacity enhancement by 25 million ton per annum, conversion of 9th berth as container terminal at VO Chidambaranar Port Trust for advanced handling technology for improved productivity, rejuvenation of Khiddar Port Docks, Dock 1 West at Shyama Prasad Mukherjee Port Authority for enhancing containerized traffic with reference to Nepal, Bhutan and other regions of the hinterland. New navigation log gate at Farakka, West Bengal, which will lead to an uninterrupted and efficient movement of vessels or barges. As they say, the journey of 1,000 miles begins with a single step. These colossal projects will be the stepping stones towards port-led economic growth and development, nurturing Vision 2030 for a new India. दूसरा है आईमेक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ावा देने हेतु दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में 4,539 करोड़ रुपए मूल्य के टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल का शिलान्यास। मैं बतलाना चाहती हूं कि ये स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना से प्रेरित है। रिमोट का बटन दबाकर ई पलक का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। A monumental partnership forged at the G20 Summit, New Delhi. आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। The India-Middle East-Europe Economic Corridor is a partnership of immense strategic importance and is set to reshape the world of logistics. IMEC unites nations with shared interests, fostering ties and promoting peace, while overcoming hurdles and deepening engagement with the Arabian Peninsula, establishing vital new links between India, Middle East and Europe. The IMEC corridor proves to be more energy efficient and will make trade with Europe 40% faster compared to the Suez Canal route. In this corridor, the upcoming Tuna Tekra deep draft container terminal of Deen Dayal Port Authority in Gujarat is set to emerge as the international trade hub. Strategically located in Kandla, this state-of-the-art greenfield terminal will have the capacity to handle 2.20 million TEUs per annum. The India-Middle East-Europe Economic Corridor will be a game-changer, fueling trade, industry, job creation and energy security. It will contribute significantly to the economic growth of the region as well as India. Global Maritime India Summit applauds IMEC's collaborative spirit and India's unwavering commitment to the maritime industry. तीसरा है मैरिटाइम अमृतकाल विजन 2047 का लॉन्च। रिमोट का बटन दबाकर ई पलक का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, India charts an ambitious course towards Maritime Amritkal Vision 2047, revolutionizing its maritime sector through world-class facilities. अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। Maritime Amritkal Vision 2047 unfolds 11 strategic themes to drive India's growth in the coming decades. First, a net zero strategy is set in motion
to make major ports carbon neutral, embracing clean fuels, and make India a leading hub for hydrogen production and distribution. Our vision also aims to quadruple port capacity, reaching over 10,000 million tons by 2047, with 100% PPP at major ports through creation of port clusters, mega ports and transshipment hubs. Embracing technology, ports will be transformed into smart and automated hubs which will become ports of the future. Ocean, coastal and river cruise tourism takes center stage, making India a leader in the Asia-Pacific region. Vision also aims to boost coastal shipping and inland waterways modal share from 6% to 12% through infrastructural and policy reforms. The vision seeks to enhance Indian tonnage, champion ship recycling, and propel shipbuilding to attain top 5 global spot. A comprehensive strategy is put in place to develop islands as maritime cities for end-to-end activities. The vision also seeks to maximize our strength in maritime professional services by enhancing our competitive advantage in maritime law, finance and insurance. As part of Amrit Kal, an innovation ecosystem takes shape, promoting world-class education, research and training, and supporting startups through maritime startup policy. Building partnerships, fostering investor-friendly policies, and enhancing maritime cooperation are key aspects of the vision to elevate India's global stature as a maritime power. In summary, Maritime Amrit Kal Vision 2047, led by visionary leadership, propels India to new heights. Attracting over 20 lakh crore of infrastructure investments, this vision propels us towards unprecedented development and prosperity. और चौथा, जागतिक तथा राष्ट्रीय साझेदारी हेतु 7.16 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के समझौता ज्ञापनों का लोकार्पण। रिमोट का बटन दबाकर ई फलक का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। The Global Maritime India Summit 2023, where the world comes together to shape India's maritime future. GMIS 2016 saw over 120 business intentions, with the signing of MOUs worth around rupees 1 lakh crore. The 2021 edition saw a staggering increase with rupees 3.5 lakh crores. And now, with investment opportunities of over rupees 10 lakh crores, GMIS 2023 is set to surpass all previous editions. In alignment with Honorable Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat, GMIS opens up a broad spectrum of opportunities with 300 plus MOUs worth rupees 7 lakh crore to be exchanged during the summit, aimed at revitalizing ports, promoting innovation, connectivity, knowledge sharing and skill development amongst others, with a significant boost to green maritime initiatives like the development of green hydrogen hubs and public-private partnerships to ensure a 4-fold increase in port capacities by 2047. GMIS 2023 not only streamlines investments but takes them to the next level, benefiting both investors and India's burgeoning maritime sector. Come, let's create, collaborate, and transform the maritime ecosystem together. राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले विकास पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमूल्य विचारों से हमें अनुग्रहित करें।
नमस्कार। विश्व भर से आए सभी अतिथिगण, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी, महाराष्ट्र गोवा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के तीसरे संस्करण में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले जब हम 2021 में मिले थे, तब पूरी दुनिया कोरोना की अनिश्चितता से घिरी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि कोरोना के बाद का विश्व कैसा होगा, लेकिन आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में उसमें से एक होगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड सी रूट से ही होता है। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में आज दुनिया को भी रिलायबल और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स की जरूरत है। इसलिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का ये एडिशन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी मजबूत रही है, देश और दुनिया को इससे बहुत लाभ हुआ है। इसी सोच के साथ बीते 9-10 वर्षों से हम इस सेक्टर को सशक्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री के कायाकल्प का सामर्थ्य रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। सैकड़ों वर्ष पहले सिल्क रूट ने वैश्विक व्यापार को गति दी थी। ये रूट दुनिया के कई देशों के विकास का आधार बना था। अब ये ऐतिहासिक कॉरिडोर भी रीजनल और ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदल देगा। नेक्स्ट जनरेशन मेगा पोर्ट्स और इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसका निर्माण, आइलैंड डेवलपमेंट, इनलैंड वाटरवेज,
मल्टी मॉडल हब्स का विस्तार, ऐसे कई बड़े काम इस योजना के तहत किए जाने हैं। इस कॉरिडोर से बिजनेस कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी बढ़ेगी, पर्यावरण का नुकसान कम होगा और बड़ी संख्या में जॉब्स का भी निर्माण होगा। इन्वेस्टर्स के पास ये एक बड़ा अवसर है कि वो भारत के साथ जुड़कर इस अभियान का हिस्सा बने। फ्रेंड्स, आज का भारत अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है। कंटेनर वेसल्स का जो टर्न अराउंड टाइम आज से 9-10 साल पहले 2014 में करीब 42 आवर्स था, वो 2023 में 24 आवर्स से 24 घंटे से कम रह गया है। पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की नई रोड्स बनाई हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट से भी हमारे कोस्टल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। ये सारे प्रयास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ईज ऑफ लिविंग को कई गुना बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी और पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है। लेकिन हमारे काम ने पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी के मंत्र को भी आगे बढ़ाया है। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी इफेक्टिव और एफिशिएंट बना रही है। भारत अपने कोस्टल शिपिंग मोड का भी आधुनिकीकरण कर रहा है। बीते एक दशक में कोस्टल कार्गो का ट्रैफिक 2 गुना हो गया है और इससे लोगों को एक कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक ऑप्शन भी मिल रहा है। भारत में इनलैंड वाटरवेज के विकास से भी बड़ा बदलाव आ रहा है। पिछले दशक में नेशनल वाटरवेज की कार्गो हैंडलिंग उसमें करीब 4 गुना ग्रोथ देखने को मिली है। हमारे प्रयासों से बीते 9 वर्षों में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी भारत की रेटिंग्स बेहतर हुई है। साथियों, शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है। हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है। अगले दशकों में
भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। मैरीटाइम क्लस्टर्स के विकास के जरिए हम शिप बिल्डिंग स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने के इंटीग्रेटेड अप्रोच पर काम कर रहे हैं। हम आने वाले वक्त में देश में कई स्थानों पर शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेंटर्स विकसित करने वाले हैं। शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में भारत पहले ही ग्लोबली दूसरे स्थान पर है। अपने मेजर पोर्ट्स को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए भारत मैरीटाइम सेक्टर में नेट जीरो स्ट्रेटेजी पर भी काम कर रहा है। हम एक ऐसे भविष्य की ओर से बढ़ रहे हैं जहां ब्लू इकोनॉमी ग्रीन प्लैनेट बनने का माध्यम होगी। फ्रेंड्स, दुनिया के बड़े बड़े मैरीटाइम ऑपरेटर्स भारत आए, भारत से ही ऑपरेट करें, इसके लिए भी भारत में तेजी से काम हो रहा है। गुजरात के आधुनिक गिफ्ट सिटी ने शिप लीजिंग को एक प्रमुख फाइनेंशियल सर्विस के तौर पर लॉन्च किया है। गिफ्ट आईएफएससी द्वारा शिप लीजिंग कंपनियों को अनेक तरह की छूट भी दी जा रही है। मुझे खुशी है कि दुनिया की 4 ग्लोबल शिप लीजिंग कंपनीज गिफ्ट आईएफएससी के साथ रजिस्टर भी करा चुकी है। मैं इस समिट में आई अन्य शिप लीजिंग कंपनी से भी गिफ्ट आईएफएससी के साथ जुड़ने का आह्वान करूंगा। साथियों, भारत के पास विशाल कोस्टलाइन है, मजबूत रिवराइन इकोसिस्टम और रिच कल्चरल हेरिटेज है। ये एक साथ मिलकर मैरीटाइम टूरिज्म की एक नई संभावना पैदा करते हैं। भारत में मौजूद करीब 5000 साल पुराना लोथल डॉकयार्ड एक विश्व विरासत है। एक तरह से लोथल क्रेडल ऑफ शिपिंग है। इस वर्ल्ड हेरिटेज को संरक्षित करने के लिए लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है। मुंबई से लोथल बहुत दूर नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक बार लोथल भी विजिट करने जरूर जाएं। फ्रेंड्स, मैरीटाइम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमने विश्व की सबसे बड़ी रिवर क्रूज सर्विस की शुरुआत भी की है। भारत अपने अलग अलग पोर्ट्स पर इससे जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। मुंबई में नया इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाया जा रहा है। इसी साल हमने विशाखापत्तनम और चेन्नई में भी ऐसे मॉडर्न क्रूज टर्मिनल बनाए हैं। भारत अपने स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ग्लोबल क्रूज हब बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है।
साथियों, भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास डेवलपमेंट, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डिमांड का ऐसा कॉम्बिनेशन है। ऐसे वक्त मैं जब भारत 2047 तक विकसित भारत होने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है, आपके लिए ये सुनहरा मौका है। मैं विश्व भर के आप सभी निवेशकों को फिर आमंत्रित करता हूं कि आप भारत आएं और विकास के रास्ते पर हमारे साथ मिलकर चलें। हम साथ चलेंगे, हम साथ साथ मिलकर के नया भविष्य भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।